Hello everyone, welcome to Career Launcher and MICAT is over. MICAT 2 is over. One of the biggest exams, last biggest exams of this session is over. So now there is another exam that is left out, that is MICT. But we have just completed our MICAT and we are here with the analysis of MICAT. And with me, I have Abhilasha ma'am. Hello, ma'am. How are you? Hello, Shashank. I'm good. How are you? I'm also good. So we have already met today. Same Yes. center. It Yes, we had exam at the same center and it was a good exam, yeah. was a good exam. Very good So exam. as we have predicted that we are going to have uh, uh, difficult quant I'm sorry, that easy DI but very lengthy one, and this is what that happened today. Now let's see what kind of thing we got today. So this is the overall pattern. In psychometric test we had 68 questions, 25 minutes time given. The descriptive test, there were 4 questions, convergent and divergent thinking. I think they have given a different name. This is simple logical reasoning. If you look at from the perspective of NMAT, SNAP, so उसमें जो logical reasoning होता है उसी का नाम उन्होंने convergent and divergent thinking डाल दिया है. Exactly. वही लेकिन है ही शशांक. वही है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं. It's the same thing. syllogism वगैरह वही से पूछा गया है. Course of action, cause effect, same stuff, all the same things. Right. And QADI, that is definitely there. General awareness, we didn't have 20 questions, we have 10 questions. Again, logo और join करने वाले, मतलब जो वो थे, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट Punch के the जो column. प्रमोटर हैं वो कौन है, उन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं. So in total we have 224 क्वेश्चन. साइकोमेट्रिक को काउंट नहीं करते, कोई फायदा नहीं है साइकोमेट्रिक काउंट करने का. डिस्क्रिप्टिव भी काउंट करने का कोई फायदा नहीं है. And this is the total time that they have allotted us, that is 130 minutes. And in between the divergent convergent thinking, verbal ability, quantitative ability, DI, and general awareness, you can easily go from one section to another section. Yeah. बीच There is में no कोई भी sectional time between the objective हाँ, test, right? So that is a good thing in a way. You can move that from was it. section to section, huh? Yes, yes, yes. That is a good thing. And descriptive test, 4 क्वेश्चन. साइकोमेट्रिक, सो साइकोमेट्रिक डिस्क्रिप्टिव में 4 चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं. ये अपने पास आया हुआ है, लेडर्स नहीं है, इसका नाम लीडर्स होना चाहिए. This is Yes, leaders. वैसे I'll tell you what, this is a very interesting topic that they gave in the descriptive test. बहुत ही bless you, हाँ, बहुत अच्छा topic दिया था, and it is so apt and relevant to today's world, isn't it? That हाँ, AGI will become or the all the systems will become, instead of artificial generative intelligence, it will all become artificial general intelligence. And then right. they asked you to speak for it or against it or give the managerial view about it. So that was a very relevant topic for today. If you see, this is what we are talking about, that all the business leaders are saying that it will suddenly become general intelligence instead of generative intelligence. So ये बड़ा अच्छा टॉपिक था और लिखने के बहुत सारी चीजें हो सकती थी. So you could have written what would be the positive perspectives in terms of economics, in terms of business outcomes, in terms of leadership outcomes, in terms of social outcomes. ये सभी चीजें positives and negatives लेकर के 3 positive points लिखने थे और 3 negative points लिखने थे. So that was a very nice one. Or impact of the above on managers with respect to their interactions with society and business. Now this was the balanced view that you had to take, that a business, how would the business benefit or lose due to this. So that was a very interesting one. तुमने क्या लिखा शशांक? मैंने तो पॉजिटिव आउटकम में वही लिख दिया था कि अब तो सारे काम खुद ही कर रहा है ये. हाँ, नेगेटिव में भी exactly. वही था कि सारे काम खुद ही कर रहा है. नाउ इट इज समथिंग टू वरी अबाउट, भी सारे काम खुद ही कर रहा है. Yes, so that yes, yes, हाँ. yes, मैंने यही So लिखा है. basically the pros and cons are same.
ट्रू। सारे काम करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? Exactly. So, एग्जैक्टली, सो या Aryan, we'll come to your question. Don't worry about it. We are going to pick every question that has been asked. ठीक है. द पिक्चर मैंने ये वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ हाँ. So the four pictures that we have seen, यस, ma'am, हाँ. what's your opinion about the four pictures? No, see, the four pictures here were there was a picture of a house which was in front of a lake something, and there was a reflection, and again there was a picture of a series of trees, and there was a picture of a man holding something in his hand, and that was again reflected. तो जैसा मेरा और तुम्हारा डिस्कशन भी हुआ था शशांक, कि ये रिफ्लेक्शंस के ऊपर है, some sort of a story that you would write keeping reflections in mind. ऑफ कोर्स देयर वुड हैव टू बी अ स्टोरी, तो स्टोरी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे कि देयर something which is of human interest, you could have written the story, but it would have something to do with reflections of time, about life and so on. तो ऐसा कुछ होना चाहिए था आपके स्टोरी में. I built a story around introspection. Yeah, reminiscence, reflection, all of that. So तो basically, अच्छा these था. अच्छा, every year they come up with some random thing. So this is convergent and divergent thinking. We had one odd one out, two data sufficiency, two cause and effect, two coding decoding, two questions on arrangement, two questions on pattern, two questions on visual reasoning, two questions on critical reasoning, one question on direction sense, two on syllogism, two miscellaneous. So this was the overall pattern of convergent and divergent. This now if I go to VARC was 3 plus 2 plus 5. ठीक है. Parajumble was 2. So basically we had three RCs unexpectedly, and if you look at the number of questions, एक में 3 है, एक में 2 है, एक में 5 है. Parajumble we had 2 questions. Close समझ ही नहीं आया कि close ही close आया हुआ था. ठीक है. Fill in the blanks. Sentence बट use क्लोजर करना इज समथिंग दैट माइकैट रियली लाइक्स डूइंग, यू नो. हर साल कुछ ना कुछ आता है क्लोजर में, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कुछ अनयूजुअल था, बट हाँ, जो अनयूजुअल था वो इतने सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे कि almost half of the section is reading comprehension. That is unusual because MyCat generally has tended to be more vocabulary and grammar focused than being reading comprehension focused. So this time it changed. That was a different thing, you know. तो ये Right. पैटर्न चेंज थोड़ा सा दिखाई दिया है. हाँ. सो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज आया है. क्वांट में आई वुड से इट इज एज बैड एज कैट दिस ईयर. क्वेश्चंस लेंदी, बहुत गंदा पेपर था, बहुत गंदा. ठीक है. आई वोंट से व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग दैट इज यू डोंट नो. ठीक है. बट द सेम थिंग आई फाउंड इन कैट एज वेल कि सब यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड समथिंग यू डोंट नो, यू नो थिंग्स, लेकिन नंबर इतने खराब थे. मैंने टाइम एंड वर्क में पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें एक आदमी 800 घंटे में काम खत्म करता है, दूसरा आदमी 1200 घंटे में काम खत्म करता है, और ये पूछा है कि ये 4 दिन काम कर रहा है, अगला बंदा 3 दिन काम कर रहा है, किस हफ्ते में काम खत्म होगा. नाउ दैट वाज टू लेंदी. यू हैव टू कैलकुलेट. इसका आंसर आई थिंक 9 जनवरी के आसपास था. किसी ने किया है क्या? एक क्वेश्चन पीएनसी का था. मिक्सचर्स का क्वेश्चन आई फाउंड वेरी 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 इजी. सीमैट एग्जाम का रिजल्ट देखते रहना, कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है. ठीक है. लक्षिका, so don't worry about it. अभी तो किसी भी टाइम आएगा वो. And Aryan has said he has attempted 14 questions in VRC, 14 in divergent thinking, 5 in QA. But Aryan, I also want to ask how many questions you have done in GK. So if you have done 14 in VRC, 14 in divergent thinking, 5 in QA, you have done a great job. क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पेपर में किसी ने भी QA में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, क्योंकि ये पेपर वो था ही नहीं जहां पे QA में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करें. उतने टाइम में तो तुम, जितने टाइम में तुम QA करोगे, QA का एक क्वेश्चन करोगे, उतनी देर में तो तुम VRC के 2 कर लोगे या डाइवर्जेंट थिंकिंग के 2 कर लोगे. So it was a wiser idea to spend more time in divergent thinking and
VARC as compared to QA. True. ठीक है. So QA was not something that I think I would suggest in this exam. लेकिन 5 क्वेश्चन और अगर 5 के 5 सही हैं, then you have done a very very good job. Oh, so okay. So there was a question on PLD, profit loss discount. I think the answer was 53%. Overall discount पूछ रहा था. SICI का total I think वो पूछ रहा था total amount. That was I think that was 5,000. इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन तो बेटा करना ही नहीं था. मैंने तो 2 लाइन लिखने के बाद उसको छोड़ ही दिया. आई शो यू. इनकम, ये वाले क्वेश्चन की बात करो यार, ये तो करना ही नहीं था. 3 क्वेश्चन देखो यार, कितने गंदे नंबर है यहाँ पे लिखे हुए हैं. ये तो देख के ही करना था, छोड़ देना था. देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग. लुक एट दिस फिगर. सो बेसिकली अगर तुम क्यूए डीआई देखोगे, सो उसमें यू आर गोइंग टू सी 8 क्वेश्चंस ऑफ डीआई एंड यू हैव 12 क्वेश्चंस इन क्यूए. सो 12 क्वेश्चंस क्यूए, आउट ऑफ 12 आई थिंक 6, 7 और 8 वर इजिली डूएबल. ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जिसमें इन रेडियस और सर्कम रेडियस का प्रोडक्ट पूछा था. वो तो करना ही नहीं था, बहुत ही खराब क्वेश्चन था वो. ठीक है. And I think the answer of that question was 108. There was one question of mensuration that you have a cuboid and you have converted into metal balls. How many balls? The answer was 1500 and that's what I got. So ये सारी जो चीजें हैं, ये I'll tell you the answers जिसके जिसके मुझे याद है. ठीक है. अच्छा, नहीं करना था पगले. जो क्वेश्चन नहीं करने थे तुमने वो सारे करे हैं, वही तो नहीं करने थे. मिक्सचर एलिगेशन वाला was very Aditya, there is no normalization. Mixture allegation was very easy and very doable. That is 250 250 each. ठीक है. So उसका वो वाला क्वेश्चन I would say that was doable. SICI was it will take 2-3 minutes and you will get the answer. ठीक है. So लेकिन apart from that there were not a lot of questions that could be solved easily. ठीक है. And I think there were 7 to 8 theta questions as well. Theta has no negative marking. Marking scheme, I have spent a lot of time reading about everything. जो instruction पहले आते हैं. So there was +1 mark, -1/4 and 0 marks. 0.25. ये जो था. ठीक है. क्यूए में 5 क्वेश्चन किए हैं. इनकम एक्सपेंडिचर वाला सेट किया बस. वीआरसी में 18 अटेम्प्ट, डीसीआर में 17. Argument was below average. देखो, don't say anything is above average or below average. स्कोर आने दो. अपने हिसाब से तो सबका ही खराब हो जाता है. कुछ लोगों का अपने हिसाब से हमेशा अच्छा होता है. दूसरे का परसेप्शन चाहिए होता है. जब भी हम स्कोर की बात करते हैं तो हमेशा दूसरे का परसेप्शन चाहिए होता है, अपना परसेप्शन नहीं चलता है. ठीक है. With a score of 20 Hades, I'll tell you one thing. 20 might be a decent score, but again, it will come down to sectional. Yeah. अगर सेक्शनल सारे क्लियर हैं तो 20 आई थिंक हो जाना चाहिए. एंड yesterday, yeah, देखो, Mr. Legend, they call you legend. So basically, who are they? I want to know. So, कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ का मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, क्योंकि बिकॉज MICAT हैज नेवर रिलीज्ड इट्स ओन कट ऑफ. So basically anyone can say that this is the cutoff, this is not the cutoff, at this score you will get in, at this score you will not get in. No one knows exactly, right? Because they are not giving you what are sectional cutoffs, they are not giving you what are total cutoffs. So जो भी है वो बस डेटा के बेस पे लोग guess कर रहे हैं. Even I can guess. If you want, I would say that in every section getting 4 marks or 5 marks will definitely help you clear out all the exams. Definitely help you out clear all the sections, and overall 20, I would say it's good score. Yeah, because I think so too. So again, attempt.
Rusty, yes. Sectional cutoff is there. Again, Aryan, the problem is not that how many attempts. The problem is what is the score? How many did you get right? You have attempted 16. 16 में अगर तुम्हारे if you got all 16 right, that's awesome. If you got 5 right, then you are screwed. So it's not like कि कितने attempt है. ठीक है. So ऑल्सो आर्यन 16. ने ये भी किया है ना कि उसने क्यूएडीआई में कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन में रैंडम आंसर्स दे दिए हैं. Then सो I दैट्स would ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक. लेकिन लेकिन इसमें मुझे कई बार ये भी लगता है इसमें कई बार हो सकता है कट ऑफ 0 भी चला जाए. क्योंकि Well, क्योंकि then he is already through. लास्ट टाइम व्हेन आई रोड माइका द लोएस्ट स्कोर इज -2.5 और सो उसमें तीन चीजें आती हैं, लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर एंड योर ओन स्कोर. सो लोएस्ट स्कोर वाज -2.5, तो कट ऑफ 0 हो सकता है. ठीक है. सो अगेन आई आई वुड मेक अ रिमार्क कि कट ऑफ कितना होगा. मैं कहता हूँ कि 5 नंबर पे गारंटीड क्लियर है, लेकिन हो सकता है वो 1 पे भी हो जाए, हो सकता है वो -2.25 भी हो. ठीक है, कुछ नहीं कह सकते उस पे. ठीक है. सो यू वांट मी टू टेल यू अ नंबर. आई डोंट नो द नंबर. Am I clear now? Because until unless they give you or they don't release the paper. ठीक है, दे डोंट रिलीज द पेपर. ठीक है. सो जो भी है वो अपने, हम ही लोग जाते हैं, हम ही लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा डेटा है. ठीक है. उसके अलावा उसमें भी क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन मेसअप हो जाते हैं, सो वी डोंट हैव एक्चुअल डेटा. ठीक है. So whatever you can ask me, whichever question you are talking about, just if you tell me which question we are talking about, I'll give you the answers, whatever answers I know. I can't answer. Anna Banana Beans gave MICAT without giving cat. How many questions did you write, Anna? It went amazing. So it went. Went. It went. Very nice. कैट दे दे पगले, कैट दे दे. अगले साल होप कि अगले साल अच्छा होगा. जीके, व्हाट डू यू वांट टू नो इन जीके सौम्या? Basically, CAT is not mandatory. It can be associated with ZAT as well or GMAT as well. So all three of them are accepted, CAT, ZAT or GMAT. So basically, all three of them are either of them is mandatory. ठीक है. So anyhow, so let's look at the questions that we know. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आया था, आई थिंक द आंसर वाज 69. The first thing I can say here that if you look at the difference, I think there is -19, then the difference is -17, the difference is -15, the next difference should be -13, and that's 12. So basically, this is the odd one out. Okay. Now, if you look at this question had an answer of, I think 9th of January. 800 घंटे और उसमें काम करता है. So again, if you want to know the answers, do let me know the questions. And iska answer I'm not very sure because I didn't spend a lot of time on this question. So basically, I think the answer is 48. Yes, it's always a problem if you get negative. ये वाला मैंने किया नहीं. In this question, the answer was this is right, and this is right. And the difference means minus. So basically, 3 statements were right. ठीक है. Any other question that you can remember, you can let me know. And there was a question of mixture alligation. Then in the question of mixture alligation, the answer was 250 and 250 ml. So this is what I remember. There was a question on TSD as well. The answer of that question is 5 hours and 24 minutes. Number of spheres was 1500. I'll tell you all the answers that I remember. मैं तुम लोगों को टॉपिक के आगे आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. जिसमें एक है उसका तो मैं बता ही सकता हूँ. टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था उसका 9th जैन था. पीएनसी आई डिडंट डू. इसका था 250 + 250.
सीरीज वाला एक क्वेश्चन था, उसका -200 है, दैट थर्ड टर्म इज 0 एंड समेशन ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज -500, समथिंग लाइक दिस। ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन, एक का आंसर था 108, सेकंड का आंसर था, मेंसुरेशन का आंसर था 1500। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आंसर था आई थिंक 53%। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आई गेस दैट वाज 5000। जो टीएसडी वाला क्वेश्चन था, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 5 hours and 24 minutes. In radius, circum radius was 108. So basically these are, this is not 63, this is 53. So if anyone who is scoring 20-25 marks and getting a reasonable score in every section, then they should start preparing for the interviews. And remember, GK is important. GK Yes, it is. And when we are talking about specifically for MICA, so आपको product के बारे में पता होना चाहिए. And even if you see in today's exam, there was one question on logos. There was in GK, the percentage of voice, I think that was 64%. The percentage का question था, उसका answer था 64%. Percentage of voice, rugby and soccer. That was 54%. No, not 54, 64. Percentage of boys rugby and soccer was 64%. So, अपन कहाँ पे थे? हाँ. So, GK में we had what? We had lot of other things. एक तो वो आया था, दूसरा who is the model for which bank, and those are the things was asked. Amitabh Bachchan is working for which bank? ये Sachin Tendulkar was for which bank? So basically those things are asked specifically in MICA. And if there is nothing else, then let's wind up. Ablasha ma'am, you have something? No, I think we are done. Let us wind up. I think we have talked about everything that was there in the paper. Right? Yes. Okay. Chalo. Okay. All the best, guys. Thank you so much for joining in. And all the best. Bye bye.